Kula match. It was a very small, very localized kind of match, and from there it gladdens my heart that we actually Ian Martin reached out to us and we played at the Lords. It's considered to be the Mecca in cricket, and to have the mixed disability team come together out there to play a match and not only play but win that match, and as a result our jersey and the England jersey went to the museum or at the Lords. So it was a very, very proud moment for all of us. And I'm very happy that mixed disability cricket is happening in India with England again. And I hope the best team wins, and that spirit of the game that brings us all together, being a fanatically crazy country about cricket. I just hope and wish all of you that you guys enjoy a wonderful game. This game helps us in understanding how true diversity actually adds and creates even more joy. So all the best for it. Thank you. Disability cricket at the ECB. Mixed disability cricket started in the UK many years ago now. We use it in our domestic disability cricket tournaments, and it just seemed to be the natural progression to take it to international level. So for years, international disability cricket, there's been blind cricket, deaf cricket, physical disability cricket, and ID, learning disability cricket, all run by different organisations with no structure or recognised support. It made it very, very difficult for national governing bodies to administer disability cricket when you've got 4 different groups all applying to the governing body for funding for different tournaments. There was no fixed tour programme, so the governing bodies couldn't provide budget a couple of years in advance like they do with the ICC Future Tours programme. The mainstream teams, the men and the women, they know where they're going to be playing in 2 or 3 years' time. That never happened with disability, and the boards were getting hit with funding request after funding request, which made it impossible for the boards to fund disability in a meaningful way. So I came up with the idea of mixed disability international cricket, because it now means the boards only have to fund 2 teams, a mixed disability team and a blind cricket team. Blind cricket, as some of you will know, is a completely separate format of the game, where deaf, physical and learning disabled players were all playing the same format. So it made sense to mix the team and play one format of the game. So the initial international series was held in England last summer between England and India, and this is the second international series. So obviously a return fixture where I'm sure India will be hoping to get the better of us. Going forward, what we're hoping for is more countries joining, because the format makes sense to the cricket boards, and hopefully in the future we will have more bilateral series, obviously leading into World Cups and hopefully the Paralympic Games, because we believe we've got a format now that can work internationally and get more disabled people playing the game. थैंक यू। और आप सबका वेलकम है बीसीसीआई की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कहूँगा कि पिछले 100 सालों से बीसीसीआई क्रिकेट चल रहा है, और पिछले 40 सालों से दिव्यांग क्रिकेट भी भारत में चल रहा था। लेकिन जब बीसीसीआई में ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री जयसा जी आए और उनके समक्ष हमने अपनी बातें कहीं, उनको अपनी समस्याएं बताई, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि भी ये क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। ईसीबी ने जिस तरीके से डिसेबिलिटी क्रिकेट को सपोर्ट किया है, तो उस तरीके से हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो 4 ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो है
ये डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जिसमें ब्लाइंड क्रिकेट है, क्रिकेट एसोसिएशन ब्लाइंड इन इंडिया, इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन, फिजिकली डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, इन चार को लेके अम्ब्रेला बॉडी है। और ये मैं आपको बता दूं कि आपके माध्यम से हम सबको बताना चाहूँगा कि ये एक अम्ब्रेला है जो बीसीसीआई सपोर्टेड बॉडी है। तो आप जब भी बीसीसीआई में बात करेंगे तो बीसीसीआई सिर्फ एक अम्ब्रेला का नाम लेगा जो है डिफरेंट लेवल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बीसीसीआई पूरा सपोर्ट कर रहा है। और मैं सिमिनू जी का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, उनके साथ में बैठा हूँ, प्राउड फील हो रहा है। जब हम बीसीसीआई बन के आए, जब इनसे हमारी मीटिंग हुई तो खुद मैम जो है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करती हैं, खुद फाउंडर चेयरपर्सन है स्वयं की। तो उन्होंने हमें, मैं आपको बताऊं कि जब हमने बात इनसे कही तो इन्होंने बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया और भूपेंद्र जी को बोला कि भूपेंद्र जी इनका जो है हमें सपोर्ट करना है, थ्रू क्रिकेट एक्सेसिबिलिटी को भी आगे जो है पहुंचाना है, अवेयर करना है। और कहीं ना कहीं हमें अभाव रहता है, जब हम स्टेडियम्स में जाते हैं तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी के नाम पे कुछ होता नहीं, हमें सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, हो सकता है वहाँ लिफ्ट भी नहीं हो, व्हीलचेयर यूजर्स के लिए भी दिक्कत होती है। लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, नए स्टेडियम्स जो बन रहे हैं वो एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रख के बन रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो पहला ऐसा स्टेडियम है जहाँ एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है एक रैंप बनाया हुआ है, वहाँ व्हीलचेयर यूजर्स जो है बैठ के मैच देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब 2019 के बाद जब स्वयं से हमारा कोलैबोरेशन हुआ तो हमारे खिलाड़ियों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने करने का प्लान किया। कभी हमारे क्रिकेट में 10,000 रुपये मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता था, वो स्वयं की वजह से 10,000 रुपये मैन ऑफ द मैच हम लोग अपने नेशनल टूर्नामेंट में देते हैं। और जब इंटरनेशनल इवेंट्स की बात आती है तो उसमें 50,000 रुपये स्वयं की तरफ से हम लोगों ने दिए। तो अच्छी बात है कि आपके खिलाड़ियों को खिलाना ही नहीं, उनको मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हमारा मकसद है। खिलाड़ियों के खेले हुए खेल की कमाई से उनके घर का चूल्हा जले, एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। 2016 में जब हमने पैरा में 4 मेडल जीते पैरालंपिक में रियो में, उसके बाद से पैरालंपिक की जो तस्वीर है इंडिया के अंदर वो बदलनी शुरू हो गई। लेकिन जिस तरीके से इयन मार्टिन ने थ्रू ईसीबी एक मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि ब्लाइंड क्रिकेट एकदम सेपरेट है, क्योंकि वो सेपरेट ही रहेगा। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट, डेफ क्रिकेट और लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिकेट, इनका क्रिकेट एक जैसा ही है। इनको मिला के अगर एक टीम बनाई जाए तो क्रिकेट ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा जाएगा। और उसको हम देख भी चुके हैं। लास्ट जून और जुलाई में हम लोग जब इंग्लैंड खेलने गए थे 7 मैचेस की सीरीज, तो वही फैसिलिटीज़ ईसीबी ने हमें प्रोवाइड की जो फैसिलिटीज़ हमारी नेशनल टीम को मिल रही थी। डबल हेडर मैच हमने खेला जहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं और हमारी महिला क्रिकेट टीम खेल रही है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और मुझे जो प्राउड फील भी हो रहा है कि स्वयं इज़ द प्राउड टू बी द को स्पॉन्सर इस इवेंट में जो है जुड़ रहा है हमारे साथ। इससे पहले हमारे इंग्लैंड जब हम गए थे तो टाइटल स्पॉन्सर था स्वयं। तो इस तरीके से कॉरपोरेट्स, इस तरीके से अगर समाज के जुड़े हुए लोग आगे आएंगे तो ये क्रिकेट भी बहुत जल्दी जो है पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। और जिस तरीके से इयन मार्टिन ने बोला कि हम आगे आने वाले समय में मिक्स डिसेबिलिटी क्रिकेट को पैरालंपिक में देखना चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि वो पैरालंपिक में क्रिकेट जाएगा। तो 5 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए टीम इंग्लैंड आई है। 23 तारीख को वो यहाँ पे आ गई थी, जिसमें 29 को हमारा ओपनिंग मैच है और ये लास्ट 6 तारीख को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगा। 2 वेन्यू पे हम लोग खिला रहे थे, इन्होंने हमें 4 वेन्यू पे खिलाए, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कप है तो अरुण जेटली स्टेडियम भी क्लोज डोर्स में है, तो वो स्टेडियम नहीं मिल पाया हमें। लेकिन ग्रेटर नोएडा का शहीद विजय सिंह प्रतीक ग्राउंड में हम लोग ये खेल रहे हैं। इनकी फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ तो दोनों टीमों को हमने 5 स्टार फैसिलिटीज़ दी है। क्राउन प्लाजा में इन लोगों को हमने रखा है। अगर हमारे खिलाड़ियों की बात करें तो मर्चेंडाइज वही जो आपके इंडियन प्लेयर्स पहनते हैं वही मर्चेंडाइज हमने उनको प्रोवाइड की है। और सुविधाओं के नाम पे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वो सुविधाएं हम देने का काम करते हैं। टीम के साथ अनुभवी कोच भी हैं, जैसे फॉर्मर राजस्थान कप्तान रोहित जलानी जी टीम के कोच हैं, देवदत्त जी डेफ की तरफ से कोच हैं। दोनों ये कोचों को कमान संभाली हुई है। उसके बाद स्ट्रेंथिंग एंड कंडीशनिंग कोच में श्री राम जी जो आजकल की मेंटोर है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में।
तो ये वो स्टाफ हैं जो लगातार काफ़ी सालों से इस क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों को समझा जाए, उन्हीं लोगों को हमारी कोशिश रहती है कि हम टीम में रखें। तो मकसद वही है कि मिक्स डिसेबिलिटी क्रिकेट को आगे लेके जाना है, और हमारी प्लान्स चल रहे हैं ईएन के साथ में कि 2028 में मिक्स डिसेबिलिटी वर्ल्ड कप हम इंडिया में करें। उनकी तैयारियों के लेके हम अभी से काम कर रहे हैं, ताकि जो एक वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ होती है वर्ल्ड कप के दौरान वो हम हमारी इन खिलाड़ियों को मुहैया करा पाएँ। अब तक 5 टीमें बन चुकी हैं वर्ल्ड में मिक्स डिसेबिलिटी की, और आगे आने वाले ड्यूरिंग द पीरियड कुछ और अगर डेवलपमेंट होगा तो उसको भी हम शामिल करेंगे। तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, और खासकर But what I wanted to say was that this tournament isn't about us. It's about the players, and our work as administrators is to give these guys, Ravindra here and Callum, the platform on which they can showcase their talents. We talk about this as a mixed disability cricket series. I want to get to a world where we can take the mixed disability out of the title and just say it's a cricket series between England and India. Okay, the disability is what gives them the option to play in this code of cricket, but every one of them can play a really high standard of club or state level cricket. If you take the time to come down and watch some of the games, I hope you'll be surprised, amazed at some of the talent that you will see on show. You've got bowlers bowling at speeds that would not look out of place in any standard of cricket. You've got spinners turning the ball as far as anybody can turn them, and you've got batsmen striking the ball as far as you've ever seen it hit. The cricket doesn't change. All that's changed is the fact that the guys that are playing the game in this series have overcome all sorts of adversity to get themselves in the position where they're playing on this stage. And you know, my call would be for all cricket boards across the world to provide pathways and opportunities for people with impairments to be able to access the sport to a similar level. I think it's very much to the credit of Ravi's organisation and BCCI for getting behind this in the way that they have, and I hope that the lead shown by India and England can be taken up by other countries as well. But I really urge you, if you can, to come down and watch some of the cricket. I saw this guy play in England last year, and he's a special talent. And similarly, our captain Callum, an amazing individual that has offered much more to life than just his cricketing skills. A real inspiration of a guy, and both teams are packed full of them. So please come down and take a look, and I hope you'll be amazed and pleased with what you see. डिसेबिलिटी टीम खेलने के लिए यहाँ आई हुई है इंग्लैंड की, क्योंकि ऐसा शायद हो सकता है कि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो, लेकिन मिक्स डिसेबिलिटी जो फॉर्मेट है काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है। लोगों को समझ आता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना सीखते हैं और नया नया सीखने के लिए मिलता है। हम एक बार इसका अनुभव कर चुके हैं इंग्लैंड में, ये दूसरा सीरीज है। कई सारी कंट्रियों से बात भी चल रही है इसमें कि ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और आगे हम प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्ल्ड कप खेला जाए। वर्ल्ड कप में जैसे कि हमारे रवि जी हैं और ईयान जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और भारत में जो क्रिकेट को बीसीसीआई को बढ़ाने के लिए रवि जी काफ़ी मेहनत करते हैं। इसमें कि हम सभी 4 पार्ट्स हैं। लोग ये ना सोचें कि हमारा क्रिकेट अलग है, हमारा क्रिकेट सेम बीसीसीआई के जो बोलने सुनने वाले हैं उन्हीं के समान है, और पूरे रूल्स रेगुलेशन भी उसके एक ही समान है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। We're getting very well looked after, so thank you very much for that. It's great also that we've arrived and it's raining, so we do feel as if we're back home. It's like, so yeah, that's no surprise there. But from a mixed disability cricket point of view, and Ian mentioned it, the standard has gone through the roof in terms of cricket. Having the best deaf players, having the best learning disability guys, the best physical disability guys. There's a real competition for places now, and as Ian says, that standard has gone through the roof. It's
really, really good cricket. And I mentioned to people back home that I work in disability cricket, and when they watch it on YouTube, they watch it on TV, they go and see games, they're really surprised at the high quality of cricket. I know the guys are looking forward to touring, to starting the matches for lots of reasons. One, to improve their cricket, to experience a different culture, but also, probably most importantly, be role models for disability sports people back home. When they go back to their clubs, they're playing high standard cricket, and they can only keep developing, keep getting better. But the key for me is showing the standard of disability sports and how it can keep growing and how it can keep developing. You know, we've been very well looked after in India. It's always a pleasure to come and play cricket over here. You know, anytime you get to the chance to represent your country in disabled cricket, it's an absolute pleasure and an honour. And them tours are coming a lot quicker now as well, which shows how far disability cricket has come in the last few years. I certainly echo what Ian said in terms of mixed disability cricket, and I think that's the way to go forward. I think it's going to be the way that we get more eyes on the game, and it's going to be the way that we improve the standard, and I think that takes it up to new platforms for us players as well. So it's really exciting for us. We can't wait to get started now. We've been here for a few days, like you say, preparing. So we're really excited for the games to get going in the next few days, and the boys from the England squad are really excited to see what the challenge offers. We know how hard it is to win in India. We know it's kind of the toughest thing in cricket. You know, you hear so many people speaking about how hard it is to win when you come over to tour to India, but that's a barrier that we're looking forward to hopefully breaking on this tour, and you know, hopefully taking some silverware back to England with us. So thank you. और हमारे जो स्पॉन्सर है स्वयं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्मीनू मैडम को, जो हमेशा हमारे डिसेबिलिटी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रही है। तो ऐसे सभी स्पॉन्सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज जो इंडिया में जो डिसेबिलिटी क्रिकेट है वो डिसेबिलिटी क्रिकेट बढ़ने जा रहा है। और ये सेकंड सीरीज़ है मिक्स डिसेबिलिटी की। पहली जो हम लोग लास्ट जून में इंग्लैंड में गए थे, तो इंग्लैंड हालांकि बहुत सालों से मिक्स डिसेबिलिटी खेलते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में पिछले साल से शुरू हुआ। पिछले सीरीज़ का नतीजा बिल्कुल इंग्लैंड के पक्ष में रहा होगा, लेकिन जो हमने एक लॉर्ड्स पे मैच खेली थी और लॉर्ड्स पे हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तो उसी दिन जीत हासिल की थी जिस दिन कपिल देव सर जो 83 में वर्ल्ड कप जीता था, उसी 25 जून को हम लोग लॉर्ड्स पे विक्ट्री। तो एक बहुत बड़ा मोमेंट था हमारे लिए। और अभी जो मिक्स डिसेबिलिटी चल रही है सेकंड सीरीज, ये मिक्स डिसेबिलिटी में जो टीम में जो मतलब बदलाव हुए हैं, जो हमने अभी प्लेयर्स शॉर्टलिस्टेड किए कोच और हमारे एसोसिएशंस ने, तो एक अच्छा बंच बना है और एक अच्छे यूनिटी से खेलेंगे। और जो ये अभी डिसेबिलिटी है तो एक सीरीज सेकंड सीरीज, तो हम लोग जीतना चाहेंगे और भारत का नाम हम लोग ऊंचा करना चाहेंगे। धन्यवाद। First of all, thank you very much, Ian, for providing this beautiful platform of mixed disability to start with. And definitely, we had a tough time in England because it was the first opportunity for us to play in that format. But yes, it was a good learning for us, and we are better prepared this time for the series. And definitely, we will have a good series this time. And I think this is a good ray of hope for all the disabled cricketers who love cricket globally. They can play and they can perform on this platform and enjoy the game of cricket further. Thank you very much. ये मैचेज डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाए जाएंगे, और प्रसार भारती का यूट्यूब चैनल है और उनका ही वेब जो है OTT प्लेटफॉर्म है, तो उन पे ये रहेगा। और हमारा जो DCCI का यूट्यूब चैनल है उस पर भी लाइव रहेगा। 10:30 टॉस होगा, 11 बजे मैच स्टार्ट होगा और 2 बजे मैच खत्म हो जाएगा। तो ये प्लान है और ग्रेटर नोएडा में है, तो आप सबको हम इनवाइट करते हैं कि आइए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल जो बच्चे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी उसके बारे में किसी के घर वालों ने सोचा ही नहीं था कि वो स्पेशल ओलंपिक से हटके मेन स्ट्रीम के क्रिकेट में डिसेबिलिटी में आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि डेफ क्रिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट और लर्निंग डिसेबिलिटी, ये 15 खिलाड़ी हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं और 4 खिलाड़ी रिजर्व हमने रखे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर से 3 खिलाड़ी हैं, 2 फिजिकल डिसेबल 4 खिलाड़ी हैं सॉरी, एक डेफ का प्लेयर है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है और 2 फिजिकल डिसेबिलिटी है। दिल्ली से मिस्टर संदीप है, हरियाणा से 3 खिलाड़ी हैं, कर्नाटका से हैं, उड़ीसा से हैं, पूरे भारतवर्ष से ये खिलाड़ी सेलेक्ट है अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे। जैसे डेफ क्रिकेट के जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के जो नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, उसमें से वो हमारे कोचिज और हमारी सिलेक्शन जो कमेटी है उसके द्वारा वो खिलाड़ी सेलेक्ट किए गए। बड़ा अच्छा मुकाबला होगा और आप आइए और इन बच्चों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में दुनिया को जितना बताएंगे उतना अच्छा है। और आप सबके माध्यम से हमारी जो वुमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम में जो वर्ल्ड कप जीत के लाई है, तो उनको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि वो पार्ट हैं DCCI का। तो आपके माध्यम से उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। मैच होगा सर, फिर एक दिन छूटेगा 31 2 ये 3 मैच यहाँ ग्रेटर नोएडा में, देन 4 और 6 आपका जयपुर के अंदर है। 4 को है जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी, 6 को सवाई मानसिंह स्टेडियम। सर हमारा जो है नेशनल टूर्नामेंट चलता है फिजिकल डिसेबिलिटी का, डेफ का, हमारे पास 28 टीमें हैं, इधर डेफ में भी हैं, हमारे पास भी हैं, बड़े नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में हमने स्पेशल ओलंपिक भारत की मदद ली है और हमारे जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनकी हमने मदद ली है ताकि ये बच्चे निकल पाए। लेकिन अभी हमारे पास 15 ही बच्चे थे, जिसमें से टॉप ये 5 हम लोगों ने। रवि जी इसमें तो इंडिया में तो कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन मैं आप बात करूं कि इंग्लैंड के प्लेयर्स की काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, वो 5 विकेट भी लेते हैं, वो हाफ सेंचुरी भी लगाते हैं, तो वहाँ काफ़ी दिनों से चल रहा है क्रिकेट। हमारे यहाँ पर अभी अवेयरनेस की कमी थी क्रिकेट को लेके, लेकिन स्पेशल ओलंपिक भारत में तो अलग अलग तरीके के खेल है, तो उसमें तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्रिकेट में वो प्लेइंग लेवल फील्ड ऑफ डेफ तो पूरा is that all of us understand cricket, okay? We know how it's played, we know the tactics, we know the fielding positions. That is no different for somebody who is deaf, has a physical disability, or somebody that has a learning disability. We need to understand what learning disability is. And it's about the processing of information. Okay, they're not. I'd never come into contact with it, and I'd never experienced it. What this is doing is bringing people together, and we're all learning about each other's disabilities and impairments all of the time. I don't think it's perfect yet, because internationally this has only been played for less than 12 months. But what it will do is foster respect and understanding of each other's disabilities, to enable the team to grow and perform to the best level that they can. The best thing that came out of it for me in the summer was the camaraderie between our players and the trust that they built between each other. When things got difficult, they didn't start picking on each other or losing patience with those that couldn't run very fast, or those that might have missed out on a communication or not understood an instruction. They all pulled together to help themselves. Now, isn't that a lesson for society? Okay, and that's where sport can make a difference. The whole game breeds on respect, and if we have that for each other, then I think, particularly in the world as it is at the moment, that can go an awful long way. Because if we don't have respect for each other and our differences, then we might as well all pack up and go home. can you tell us Last time we played India, and the second time we playing. So have you changed your team or something? We have made some changes. We had a couple of guys unavailable because of work. So yeah, we've had to make changes. That's the other thing you got to realise. All of these guys have got lives away from cricket. So we've got players that are taking unpaid leave from work to come and play in these series. I think what we can do through more coverage and getting more eyes on our form of cricket, we can raise the profile of it.
Once people see the standard of it, they will see that the product that we have is marketable. And once that penny falls, then we can start looking to making these guys maybe semi-professional to professional. We've all seen the rise of the women's game over the last sort of 10 or 20 years, and I believe that disability cricket is on the same trajectory.